So आज हम ये प्रीलिम्स स्पेसिफिक सब्जेक्ट स्पेसिफिक डिस्कशंस जो है स्टार्ट करेंगे. एंड हियर what we will do, see we are taking this material, we'll be discussing this material as it is. हम directly PDF से discuss करेंगे. So there is this material called Prelims Compass. हम उससे जो बहुत important points हैं, the points that are very relevant from the prelims perspective, we will discuss from that. This is a freely available material. You can go and download it. This is राउस का एक मटेरियल है ये जो लास्ट ईयर के प्रीलिम्स के टाइम पर आया था, बट इट कैन बी वेरी रेलिवेंट बिकॉज इट हैज स्टैटिक एंड द कंटेम्प्रेरी पोर्शंस एज वेल. सो ये कन्वीनियंट है फॉर डिस्कशन हियर. सो व्हाट आई होप इज दैट हम इस मटेरियल को यूज करेंगे बिकॉज दिस इज freely available in public domain. There should be no copyright infringement issue for discussing this material on this channel. Because this is there available on their website as well as on public domain, so we can discuss this. तो हम इसको directly इसी से ही discuss करेंगे because you know अगर हम ज़्यादा time if we यहाँ वहाँ से topics अगर discuss करने की कोशिश करें, so it will take a longer time and we will not be able to complete the very relevant topics from the examination perspective. So we will cover very important topics from here and quickly हम इसको we will go through this in this particular वीडियो. एंड इस तरीके से आप प्रीलिम्स बास्केट वी विल कंटिन्यू. प्रीलिम्स बास्केट तो करेंगे ही, जो प्रीलिम्स बास्केट सीरीज है. इन दैट वी विल पुट दोज फैक्ट्स एंड दोज वुड बी फैक्ट्स दैट आर फ्रॉम डिफरेंट टॉपिक्स. ठीक है, कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स जो अलग अलग टॉपिक से हो सकते हैं, दैट वी विल पुट इन वन बास्केट एंड दैट वुड बी देयर इन द प्रीलिम्स बास्केट. बट सब्जेक्ट स्पेसिफिक डिस्कशन जो है आज वी विल बिगिन विथ दिस मटीरियल एंड वी विल डिस्कस दिस मटीरियल एंड वी विल प्रोसीड. ठीक है, और उसमें से सारा कुछ डिस्कस नहीं करेंगे, जो इंपॉर्टेंट लगे, जो द थिंग्स दैट आर वेरी रेलेवेंट फॉर अस, दोज थिंग्स वी विल डिस्कस. So we'll be able to cover almost the entire environment portion from here. Apart from that, you'll have to also follow your own current affairs जो अभी चल रहा है environment में. उसके लिए whatever newspaper that you're following is important. But more or less, a lot of it we will be able to cover from here, right? And this can be very relevant from the prelims perspective. So let's get started without much ado. First of all, basics of ecology, environment and biodiversity. इससे start करेंगे ये topic से. So this starts with a very basic definition of what ecology is. So we don't have to go into that much detail. बस ecology यही होता है कि ecology is the study of individual organisms, population, community, ecosystem, biome and biosphere, which form the various levels of ecological organization. We will see what that is. Then next, they talk about what is environment. Environment is the biotic and abiotic surrounding of an organism or population and also includes the factors that have an influence on their survival, development and evolution. So biotic, living organisms, and abiotic are the non-living organisms. So environment is composed of biotic and non-biotic of biotic and abiotic elements, that is non-living organisms. And environment consists करता है of the factors that have an influence in the survival of the organism, in the factors that have an influence on the development and the evolution of the organism. So those factors also come under environment. quickly ये देख लेते हैं, कभी कभी ऐसे छोटे छोटे facts जो है वो important हो जाते हैं and it's best not to neglect these basics of ecology. ठीक है, so quickly we will see this. अब इकोलॉजी की बात करें, so this is the hierarchy, ecological hierarchy. So levels of organization तो broader हैं, but as far as ecology is concerned, this is it. But we will see from the beginning. अब atoms की अगर so सबसे basic unit क्या है? Atoms, then molecules, then there is this protoplasm, then there are cells, then there are tissues, then there are organs. These यहाँ से जो है ecological hierarchy. This is the hierarchy in ecology, ecological hierarchy. Organisms, basic, then there are populations, and then there are communities, and then there are ecosystems, and then there are biomes, and then there is the biosphere. Ecology में इतना है. We will see एक एक करके क्या है, फटाफट देख लेंगे. And then Earth, and then solar system, galaxies. So this is all very very basic. अब cell जो है, as far as living organisms are concerned, cell is the basic unit of life of any organism, living organism. So एक basic unit of life क्या है एक living organism के अंदर? That is a cell, right?
and an individual or an organism is the smallest unit of interaction in an ecological arena. तो ecology की अगर हम बात करें, so the basic unit क्या है? Ecology में basic unit है individual या organism. Organism या single individual की बात करें तो an organism is a single individual or being. जैसे कि एक elephant अगर काजीरंगा में है, so that is a single organism, right? Simple. There's nothing to explain over here. Then species. Species क्या होते हैं? It is similar organisms having the potential to interbreed and produce fertile offspring. Example, the entire elephant population. So similar organisms जिनके पास interbreeding करने का potential है and they have the potential to produce a fertile offspring. So they are one species, right? Then population. Population क्या है? एक group of individuals जो एक एरिया में रहते हैं, ठीक है? So it is a group of individuals that occupy one particular area or inhabit a particular area. जैसे elephants of Kaziranga form the population of elephants in that particular area. Simple, nothing to explain. एक एरिया में काजीरंगा अगर एरिया हम कंसिडर कर रहे हैं, उसमें the elephants that inhabit that area of Kaziranga are the population of elephants in that particular area. Simple, there's nothing much to be explained here. Biological community. अब पॉपुलेशन तो हो गया कि लेट अस से हम एक स्पीशीज की बात करते हैं, एक पर्टिकुलर एरिया अगर हम चुन रहे हैं और उस एरिया में अगर हम एक पर्टिकुलर स्पीशीज की बात करते हैं, देन वी टॉक ऑफ पॉपुलेशन ऑफ दैट स्पीशीज इन दैट एरिया. बट अगर हम इसी एरिया को लें और हम बात करें अबाउट जितना भी पॉपुलेशन है वहां पर ऑफ अलग अलग स्पीशीज ऑफ प्लांट्स, एनिमल्स, माइक्रोब्स एंड ऑल अदर लिविंग फॉर्म्स in this particular area, that assemblage is what we call as biological community. ये सब एक दूसरे के साथ जो interact कर रहे हैं, ठीक है, they all form a part of the biological community. अब जैसे वही एग्जाम्पल यहाँ पे एक्सटेंड कर दिया गया है, तो बायोलॉजिकल कम्युनिटी की अगर हम बात करें, सो इन दिस पर्टिकुलर एरिया, लेट्स से हम एलिफेंट्स की बात कर रहे थे, तो दैट वाज पॉपुलेशन ऑफ एलिफेंट्स इन दिस एरिया, दैट इज एक स्पीशीज की बात. अब हम वही बात करें अबाउट एलिफेंट्स, राइनो, बैक्टीरिया एंड अदर वाइल्ड एनिमल्स एंड प्लांट्स ऑफ दिस पर्टिकुलर एरिया, दैट इज से काजीरंगा, देन व्हाट हैपेंस, देन दैट इज अ बायोलॉजिकल कम्युनिटी. अब एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर यह है कि बायोलॉजिकल कम्युनिटी जब हम कहते हैं, व्हेन वी यूज बायोलॉजिकल कम्युनिटी, दिस डज नॉट इन्वॉल्व इंटरैक्शंस ऑफ लिविंग बीइंग्स विद एबायोटिक और फिजिकल एनवायरनमेंट. ठीक है, बायोलॉजिकल कम्युनिटी में वी आर जस्ट टॉकिंग अबाउट द लिविंग बीइंग्स. हम इंटरैक्शन की बात नहीं कर रहे हैं विद द एबायोटिक पार्ट. ठीक है, और वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट द इंटरैक्शन विद द फिजिकल एनवायरनमेंट, जस्ट द स्पीशीज दैट इनहैबिट दैट पर्टिकुलर एरिया, दोज फॉर्म द बायोलॉजिकल कम्युनिटी. अब वहीं पर हम अगर फिजिकल एनवायरनमेंट को भी कंसिडर करें या फिर जो एबायोटिक कंपोनेंट्स है उसको भी कंसिडर करें, देन दैट बिकम्स एन इकोसिस्टम. ठीक है, सो इकोसिस्टम इज बायोलॉजिकल कम्युनिटी प्लस द फिजिकल एनवायरनमेंट. So ecosystem में क्या रहता है? This, remember, ecosystem involves interaction between the living component and the non-living component. ठीक है, so it is an interaction between the living and the non-living worlds or the biotic and abiotic worlds. So ecosystem consists of this interaction. Remember this. So there is a subtle difference between a biological community and an ecosystem. And then again something very basic. Landscape क्या होता है? It is a unit of land with a natural boundary having a mosaic of patches representing different ecosystems. जैसे कि view of river, a view of a river, its valley, its grasslands nearby, ये सब क्या फॉर्म करते हैं? एक लैंडस्केप फॉर्म करते हैं from a mountain top. So basically landscape is, अगर हम एक पिक्चर क्लिक कर लें from a mountain top, let's say, that's what is given here as an example. So वहाँ पे हमें river भी दिखेगा, valley भी दिखेगा, grasslands भी दिखेगा. So there are these 3 different types of ecosystems in one picture. That is a landscape, not very relevant. Anyhow, biome क्या है? Biome की अगर हम बात करें तो एक
लार्ज एरिया, ठीक है, एक लार्ज एरिया को अगर हम कंसिडर करें, उसका एक कैरेक्टरिस्टिक वेजिटेशन होता है एक पर्टिकुलर, इफ वी कंसिडर अ लार्ज एरिया, लेट्स से फॉर इंस्टेंस ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट्स ऑफ द वेस्टर्न घाट्स, द एग्जांपल दैट इज गिवन हियर. So tropical rainforests of western ghats, we can call it a biome, and it is basically a large area that जिसका एक characteristic vegetation होता है, उसके साथ जो associated animals होते हैं, there is an associated fauna, animal life, and that is what forms a biome. ठीक है, इसका example tropical rainforests of western ghats, and they are characterized with vegetation of mahogany, ebony, rosewood, etc. So ये एक इम्पॉर्टेंट चीज यहाँ पर ये है, इसी ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट ऑफ वेस्टर्न घाट्स फॉर्म अ टिपिकल बायोम. एंड ये एक चीज ध्यान में रखिएगा जनरली भी कि ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट जो हैं ऑफ द वेस्टर्न घाट्स, they are characterized with the vegetation such as mahogany, ebony, rosewood, etc. We have also covered this fact in the prelims basket. So this is a fact that becomes relevant because this is a typical vegetation that is found in these tropical rainforests. Mahogany, ebony, rosewood, etc. And यहाँ पे इस तरीके, वैसे यहाँ पे tropical rainforests की बात करें of western ghats specifically, they are accompanied with animal life of the Malabar civet, Nilgiri tahar, and climatic conditions of high rainfall, high humidity, and higher temperature. Fine, clear. Up on a very broader scale, biosphere is on a global scale. This is all of the Earth's terrestrial biomes, जितने भी biomes हैं Earth के अंदर, terrestrial biomes, and then there are aquatic systems. ये सब मिलाकर they form the biosphere. ठीक है, जितने भी terrestrial biomes हैं, biomes क्या थे? If you remember, biomes are large areas characterized by major vegetation types. So उसका एक specific vegetation होता है. Okay, so terrestrial biomes and aquatic system together, पूरे अर्थ का, दे कॉन्स्टिट्यूट द बायोस्फीयर. ओके, सो इसमें लोअर एटमॉस्फेयर, लैंड, ओशंस, रिवर, ये सब इंक्लूडेड है. एंड सो ये है. तो बेसिकली ये लग रहा होगा कि शायद बहुत बेसिक है, बट कभी कभी ना हम बेसिक चीज़ों को निगलेक्ट कर देते हैं, एंड एटलीस्ट ऑन दैट पार्ट वी शुड नॉट लूज आउट ऑन आवर मार्क्स, राइट. सो हम बेसिक्स को भी अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे, जल्दी करने की कोशिश करेंगे बेसिक्स एनी हाउ. ठीक है, तो लेट्स कंटिन्यू. ऐसे तो मटेरियल बहुत हैं, आप whatever material you're doing your environment portion from is good enough, but this material was concise, and यहाँ पे जो important points हैं ये this is really good for that. Like at one place in सारे important points mentioned हैं, so it was good to be thought it's relevant if you pick this up and carry out our discussion. Now biotic interaction. So biotic interactions are the ways in which mechanisms through which organisms interact with each other. ठीक है, important interactions देख लेते हैं एक बार. एक स्पीशीज A है और दूसरा स्पीशीज B है. म्यूचुअलिज्म क्या होता है? म्यूचुअलिज्म या फिर सिम्बायोटिक रिलेशनशिप ये होता है कि दो स्पीशीज, लेट्स से स्पीशीज A है और स्पीशीज B है. अब म्यूचुअलिज्म या सिम्बायोटिक रिलेशनशिप तब होता है जब स्पीशीज A को भी फायदा हो रहा है, स्पीशीज B को भी फायदा हो रहा है. ये दोनों एक सिम्बायोटिक रिलेशनशिप में है, दैट इज व्हाट इट इज. ठीक है, तब इसको हम सिम्बायोटिक रिलेशनशिप कहेंगे. एग्जाम्पल इसका क्या है? लेग्यूमिनस प्लांट्स एंड नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया. नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया और लेग्यूमिनस प्लांट्स के बीच में एक सिम्बायोटिक रिलेशनशिप है. प्रोसेस ऑफ पॉलिनेशन इन प्लांट्स. पॉलिनेशन में कैसे होता है सिम्बायोटिक रिलेशनशिप? आई होप आपको पता है. पॉलिनेशन बेसिकली अगर हम देखें तो दिस इज वन ऑफ द मोस्ट फैसिनेटिंग प्रोसेसेस इन नेचर. ठीक है, पॉलिनेशन में बेसिकली फ्लावरिंग प्लांट्स जो है दे रिप्रोड्यूस, एंड प्रोसेस पॉलिनेशन में होता क्या है कि ये एक प्रोसेस है बाय विच pollens get transferred from the male parts to the female parts of the same or another plant. ठीक है, so इस मूवमेंट के लिए, मूवमेंट ऑफ द pollen from one plant or the other or within the same plant, क्या होता है कि there is a requirement of another organism, और वो होते हैं pollinators.
ठीक है, इंसेक्ट्स। सो प्लांट्स जो हैं, प्लांट्स और जो पॉलिनेटर्स हैं उनके बीच में एक म्यूचुअलिस्टिक रिलेशनशिप होता है जिसके थ्रू दोनों बेनिफिट करते हैं। दोनों कैसे बेनिफिट करते हैं? प्लांट पॉलिनेटर रिलेशनशिप की अगर हम बात करें तो पॉलिनेटर जो है वो बेनिफिट करता है, यानी कि जो इंसेक्ट होता है उसको फूड मिलता है, फूड रिवॉर्ड मिलता है that the flower gives in the form of nectar or protein, in the form of nectar or the pollen. And plant को क्या मिलता है उसके बदले में? Plant gets, the pollinator moves from one flower to another, so this can transfer the pollen from one plant to another, that is from the male parts of the flower to the female parts of the flower, and that is how pollination takes place. But वो थोड़ा extra ही हो गया, but there is a mutualistic relationship between a pollinator and a plant, a flower. ठीक है. Then there is commensalism. Commensalism का मतलब होता है, let us say दो species है, species A benefits and species A को ना कोई फायदा हो रहा है ना कोई नुकसान हो रहा है through this relationship. इसका example एक ये है रेमोराज. रेमोराज एक तरीके के fish हैं, ठीक है, so they are a fish, and ये जो रेमोराज हैं they are known to attach themselves to the sharks in the sense कि जो शार्क होता है, लेट्स से शार्क अपना खाना खा लेता है, जो बच जाता है वो रेमोराज हैव. रेमोराज फीड ऑन द लेफ्ट ओवर फूड ऑफ द शार्क, और इससे शार्क को कोई नुकसान नहीं हो रहा क्योंकि शार्क हैज हैड इट्स शेयर, और जो बचता है दैट द रेमोराज कंज्यूम. सो दैट इज एन एग्जांपल ऑफ कमेंसलिज्म. देन देयर इज अमेंसलिज्म, जहां पर एक स्पीशीज को नुकसान हो रहा है और एक जो स्पीशीज ए है उसको नुकसान हो रहा है, स्पीशीज बी को कोई असर नहीं पड़ रहा है, स्पीशीज बी के ऊपर कोई असर नहीं पड़ रहा है. ठीक है, तो एक एग्जाम्पल के तौर पर अगर हम देखें तो देयर इज, लेट अस से देयर इज अ टॉल ट्री. So let us say there is a tall and wide tree. तो इस tall and wide tree के नीचे there are certain plants और certain छोटे छोटे trees हो सकते हैं, छोटा सा plant हो सकता है, there are many. तो क्या हो सकता है कि इस बड़े पेड़ को तो कोई नुकसान नहीं हो रहा है, पर ये जो plant है जो नीचे है उसको नुकसान हो रहा है कि उसको सनलाइट पूरी तरह से नहीं मिल सकता है. So that is basically shading out of one plant by a taller and wider one. So that is an example of amensilism. So one example is of amensilism is this alliopathy. Alliopathy basically क्या है? It is एक biological phenomena होता है, ठीक है, जहां पर एक organism produces certain biochemicals जो दूसरे organism, in the sense it could be trees. तो क्या कर सकते हैं ये trees और plants? What they do is they basically produce certain biochemicals and that influences the growth, survival, reproduction of other organisms. यानी कि ये कुछ ऐसे secretions कर सकते हैं. Alliopathy is inhibition of one plant by secretions of another. So they might secrete something that may inhibit or stop or slow down the germination or growth of the other plant. So ये जो ऑर्गेनिज्म इस तरीके का सेक्रीशन प्रोड्यूस कर रहा है उसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बट जिसके ऊपर ये जिससे इस सेक्रीशन से जिसके ऊपर इफेक्ट हो रहा है दैट इज नेगेटिवली इम्पैक्टेड. सो दिस इज एन एग्जांपल ऑफ अमेंसिलिज्म. देन देयर इज पैरासाइटिज्म. पैरासाइटिज्म समथिंग वी नो, एक स्पीशीज बेनिफिट करता है एंड स्पीशीज ए बेनिफिट्स एंड स्पीशीज बी लूजेस आउट और इज हार्म्ड. फाइन. सो mosquitoes, ticks, protozoans that cause malaria. So these are examples of parasites. So इसमें कुछ खास explain करने के लिए नहीं है, parasites तो common चीज है. तो mosquito. Then there is competition. Competition क्या है? दोनों को नुकसान हो रहा है. There is organism A, the organism B. इनके interaction से, see, lion and tiger share the same niche. ठीक है? So then they are said to be in competition. Right? प्रेडेशन क्या है? एक को फायदा है एक को नुकसान है, बट दिस इज नॉट द सेम एज पैरासाइटिज्म. लायन प्रेडेशन आपको पता ही है, लायन एंड जीब्रा. लायन इज द प्रेडेटर, जीब्रा इज द प्रे. सिमिलरली बेयर एंड फिश, फॉक्स एंड रैबिट. सो थिंग्स लाइक दैट, राइट? प्रेडेशन कॉमन, competition
common. But जो दो चीजें हैं that sometimes we might not remember, one हो गया वो commensalism and दूसरा amensalism. वेरी क्विकली फूड चेन एंड फूड वेब, इसमें ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे. सी फूड चेन क्या है? फूड चेन इज अ लीनियर सीक्वेंस ऑफ ऑर्गेनिजम्स थ्रू विच न्यूट्रिएंट्स एंड एनर्जी पास. बेसिकली फूड चेन अगर हम बात करें तो जो है लोएस्ट लेवल पे देयर आर प्रोड्यूसर्स, दैट इज उसको हम ट्रॉफिक लेवल्स बुलाते हैं. तो देयर इज दिस फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल जहां पर प्रोड्यूसर्स हैं. तो ट्रॉफिक लेवल बेसिकली क्या है? ट्रॉफिक लेवल of an organism is the position it occupies in the food web. So it can be 1 2 3 4 ऐसे numbers किया जाता है, नंबर दिया जाता है. So जो 1 पे होगा that is जो सबसे lowest in the step. तो first trophic level पर कौन रहता है? Producers रहते हैं, यानी कि plants. Okay, so there are these green plants that are part of producers. Then there is the second trophic level, primary consumers होते हैं, जैसे herbivores जो इन plants को खाते हैं. And then there are the third trophic level, secondary consumers who consume these herbivores. Okay, and then there are the animals on the fourth trophic level, that is the tertiary consumers who consume these. They are the secondary carnivores who consume these carnivores, right? And then there are these apex predators like eagles, like lions, tigers, etc. So they are the apex predators. अब there is एक concept होता है pyramid का, that is ecological pyramid. अब pyramid of numbers हो सकता है, pyramid of energy हो सकता है, right? Importantly जो होता है, so energy कैसे flow करता है trophic levels पर? Sun, see, from the sun these plants get energy, that is, let's say they get about 10,000 kilocalories of energy. So what happens is that the primary consumers get only 10% of it. So यहाँ पे इनको 1000 kilocalories मिलता है. And then further up heat loss हो जाता है basically in this process as you go up. ठीक है, तो then उसके ऊपर वाला जो consumer होगा, that is secondary consumers, that will get only 10% of this. So that is again just 100 kilocalories or 100 units, whatever you call it. And then उसके ऊपर और भी कम, just 10% of this, that is 10 kilocalories tertiary consumers को मिलता है. So if you see the energy, the pyramid of energy, pyramid क्या है? अगर हम pyramid हम basically pyramid is a graphical representation. तो pyramid of energy जो है वो हमेशा upright रहता है. ठीक है, तो इस तरह से क्योंकि सबसे ज्यादा एनर्जी किसको मिलेगी? जो नीचे वाले होंगे, प्राइमरी प्रोड्यूसर्स को सबसे ज्यादा एनर्जी मिलेगी, फिर उसके बाद कम होता चला जाएगा, फिर सबसे ऊपर वाले को सबसे कम. सो दिस इज ऑलवेज अपराइट, द पिरामिड ऑफ एनर्जी. पिरामिड ऑफ नंबर्स की अगर हम बात करें तो जनरली दैट इज ऑल्सो अपराइट. पिरामिड ऑफ नंबर्स यानी कि व्हाट? पिरामिड ऑफ नंबर्स भी जनरली अपराइट होता है, क्योंकि क्या होता है कि सबसे ज्यादा ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं जनरली दिस इज व्हाट इट इज कि पिरामिड ऑफ नंबर्स इज अपराइट. ये जनरल होता है, कुछ एक्सेप्शंस भी होते हैं वेयर इट इज इन्वर्टेड. यानी कि जब हम कहते हैं कि पिरामिड ऑफ नंबर्स इज अपराइट, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये है कि जो नीचे लेवल्स पर हैं, जो लोअर ट्रॉफिक लेवल्स पर हैं, सबसे ज्यादा नंबर उनका है, यानी कि सबसे ज्यादा नंबर होगा प्लांट्स का. देन उससे कम होंगे प्राइमरी कंज्यूमर्स, उससे भी कम नंबर में होंगे, नंबर वाइज होंगे कार्निवोर्स, उससे भी कम होंगे सेकेंडरी कार्निवोर्स, और सबसे कम होंगे जो एपेक्स प्रेडेटर्स होंगे नंबर वाइज. तो देयर इज दिस पिरामिड ऑफ बायोमास एज वेल. बायोमास क्या होता है इकोलॉजिकल टर्म्स में? बायोमास इज बेसिकली द सम टोटल mass of living organisms, that is living organisms like plants, animals, accumulated in a specific unit of area, यानी कि mass per unit area of those living organisms. अब हम pyramid of biomass for grassland ecosystem देखें, so that is generally upright. Mostly for most terrestrial ecosystems this pyramid of biomass is upright, यानी कि सबसे ज्यादा biomass जो है producers lowest levels पर मिलेगा, lower trophic levels पर, and then there is उससे थोड़ा कम हो जाएगा ऊपर, and then और भी कम, that is dry weight kilogram per unit area basically it is, and then there is this और भी कम हो जाता है basically. ये this is what we have to know कि this is upright mostly. कुछ aquatic systems हैं जिसमें वो inverted हो जाता है. अब हम पिरामिड ऑफ नंबर्स की अगर हम बात करें, पिरामिड ऑफ नंबर्स इन्वर्टेड कभी कभी कुछ केसेस में इन्वर्टेड हो सकता है. जनरली एक
सिस्टम में मोस्ट लाइकली पिरामिड ऑफ नंबर्स जो है वो अपराइट होता है, यानी कि प्रोड्यूसर्स प्लांट सबसे ज्यादा होते हैं एंड एपेक्स प्रेडेटर एज वी गो अप द ट्रॉफिक लेवल फिर वो नंबर्स कम होते चले जाते हैं। पर कुछ ऐसे केसेस भी होते हैं वेयर देयर इज दिस इन्वर्टेड पिरामिड ऑफ नंबर्स। ये जनरली एक ट्री इकोसिस्टम में हम कह सकते हैं हो सकता है, यानी कि एक फॉर एग्जांपल एक ट्री है दैट सपोर्ट्स मल्टीपल ऑर्गेनिजम्स, तो देयर इज दिस ट्री एंड देन देयर आर प्राइमरी कंज्यूमर्स यहाँ पर इस ट्री पर, एंड फिर उनको कंज्यूम करने के लिए ज्यादा नंबर ऑफ birds come in. So this kind of a system is an inverted pyramid of numbers, is an example of an inverted pyramid of numbers. अब हम inverted pyramid of biomass कहाँ देख सकते हैं? We can see it in marine ecosystems. We can get to see inverted pyramid of biomass. क्या हो सकता है यहाँ पर? Biomass की अगर हम बात करें तो what we saw was biomass is the sum total mass of living organisms in that particular in a specific unit area per unit area. तो marine ecosystems में their biomass wise large fishes would be more, and then lesser biomass wise then उससे कम small fishes, and then biomass wise उससे कम zooplankton and phytoplankton. That is mass per unit area, that is mass of living organisms per unit area biomass wise. Inverted pyramid हो सकता है होता है marine ecosystems में. Alright, so ecological pyramids के बारे में एक आइडिया मिल गया. अब फूड चेन क्या है? एक लीनियर सीक्वेंस ऑफ ऑर्गेनिजम्स दैट वी सॉ, ठीक है, एंड थ्रू विच न्यूट्रिएंट्स पास एंड एनर्जी पास एज वन ऑर्गेनिज्म ईट्स द अदर. सो इन अ फूड चेन क्या होता है? हर एक ऑर्गेनिज्म एक ट्रॉफिक लेवल ऑक्यूपाई करता है एंड वी हैव सीन दैट, राइट. अब फूड वेब की अगर हम बात करें तो दिस इज अ मोर रियलिस्टिक थिंग जहां पे देयर इज इंटरकनेक्टेड फूड चेन्स. जब फूड चेन्स हम इंटरकनेक्ट, हमेशा लीनियर मॉडल तो नहीं होता है, सो देयर कैन बी इंटरकनेक्टेड फूड चेन्स एंड दैट इज अ मोर रियलिस्टिक रिप्रेजेंटेशन एंड दैट इज व्हाट फूड वेब्स आर. देन एक चीज और है यहाँ पर, ये याद रखिएगा कि प्रोड्यूसर्स और को हम ऑटोट्रॉफ्स भी बुलाते हैं. ऑटोट्रॉफ्स क्या है? दे मेक देयर ओन ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स. प्लांट्स फॉर इंस्टेंस, ठीक है, वो अपना खुद का फूड बनाते हैं, दे मेक देयर ओन फूड, दे मेक देयर ओन ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स, सो दे आर ऑटोट्रॉफ्स. इसमें दो कैटेगरीज हैं, फोटो ऑटोट्रॉफ्स एंड देन देयर आर कीमो ऑटोट्रॉफ्स. ठीक है, फोटो ऑटोट्रॉफ्स जैसे कि प्लांट्स, वो क्या करते हैं? दे यूज एनर्जी फ्रॉम द सनलाइट. फोटो, they use energy from the sunlight and make their organic compounds जैसे कि sugar out of carbon dioxide in photosynthesis. Fine. So photoautotrophs employ the process of photosynthesis, use sunlight to make their food. Fine. Chemoautotrophs क्या है? They use energy from chemicals, chemical reactions के through they use energy from chemicals and उसके through they make organic compounds out of carbon dioxide or similar molecules, and this is what is known as chemosynthesis. Fine. Heterotrophs क्या होते हैं? Heterotrophs are consumers. ठीक है, producers को हम autotrophs कहेंगे, consumers को हम heterotrophs कहेंगे. So they get their organic molecules by eating other organisms. So those people who जैसे हम plant जैसे कि प्लांट्स या जैसे कि हम जो प्लांट्स पर फीड करें या कोई ऑर्गेनिज्म जो प्लांट्स पर फीड करते हैं, दे आर heterotrophs, right? So they feed on plants or they feed on animals or they feed on both, right? Consumers or heterotrophs. So they get their organic molecules from others. Fine, सिंपल है. अब इसमें मैक्रो कंज्यूमर्स हो सकते हैं या माइक्रो कंज्यूमर्स हो सकते हैं. मैक्रो कंज्यूमर्स are the ones who feed on plants or animals or both. Micro consumers are saprotrophs or decomposers. Saprotrophs, remember this, decomposers. So food chain के types, एक grazing food chain हो सकता है that starts from plants and then goes all the way to carnivores, green plants and herbivores and carnivores, इस तरह से चलता है, ठीक है. So that is basically directly dependent on sunlight.
जो जनरल ग्रासलैंड में देखने के लिए मिलता है, यू नो दोज, या फिर फाइटोप्लैंक्टन, देन जूप्लैंक्टन एंड देन फिश, दैट काइंड ऑफ सीक्वेंस, या फिर ग्रास, रैबिट, फॉक्स जैसे इस तरीके का सीक्वेंस. देन देयर इज दिस डेट्रिटस फूड चेन. डेट्रिटस फूड चेन क्या होता है? दिस इज अनदर टाइप ऑफ फूड चेन जहां पर इट गोज फ्रॉम डेड ऑर्गेनिक मैटर इनटू माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एंड देन ऑर्गेनिजम्स फीडिंग. So then the organisms feed on. So see, देखिए इसका बेसिकली सिंपल वे में अगर हम इसको समझने की कोशिश करें, सो डेट्रिटस फूड चेन जो है दैट बिगिंस विथ डेट्रिटस, दैट इज डेड ऑर्गेनिक मैटर, फॉलन लीव्स, तो वैसे स्टार्ट होता है. दिस बिगिंस विद दैट. प्राइमरी कंज्यूमर्स जो हैं दे आर नोन इन दिस एज डेट्रिटिवोर्स. फाइन. तो एग्जाम्पल के तौर पर अगर हम देखें तो लेट अस से डेड ऑर्गेनिक वेस्ट है, ठीक है, उसको कुछ माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिजम्स जैसे कि बैक्टीरिया, फंजाई, ये सब कंज्यूम कर रहे हैं. इन माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिजम्स को लेटर ऑर्गेनिजम्स लाइक स्नेल, अर्थवर्म्स कंज्यूम कर रहे हैं, फिर उन अर्थवर्म्स को कोई और कंज्यूम कर रहा है. सो दैट यू नो दैट इज अ डेट्रिटस फूड चेन. इसका एक और एग्जाम्पल ये हो सकता है कि मैंग्रोव सिस्टम, मैंग्रोव कोई भी एग्जाम्पल ले सकते हैं. So leaves, let's say leaves of a mangrove tree. So when the leaves of a mangrove tree fall into water, then so parts of these leaves are basically eaten by छोटे छोटे organisms जैसे कि insect larvae, crabs, and then later ये जो organisms हैं they are eaten by fishes who are carnivores. And then these fishes are further eaten by larger fishes. So basically it starts from this dead organic matter or fallen leaves. Fine. So basically this system is not so much dependent directly on solar energy, rather it is dependent on the influx of organic matter that is produced in some other system. Fine. Ecological pyramids, so we have seen already, right? Now biogeochemical cycles, very quickly. Biogeochemical cycle basically क्या होता है? A pathway by which a chemical substance moves through biotic and abiotic compartments of earth. So biogeochemical cycles, for example, carbon cycle, nitrogen cycle, phosphorus cycle, sulphur cycle. So it is a cycle through which these substances, these chemical substances move throughout the different compartments of the earth. Right? They go through the biosphere, they go through the lithosphere, atmosphere, hydrosphere, सब जगह इनका cycle. They go through the cycle. So those cycles, those pathways are biogeochemical cycles, right? So दो तरीके के biogeochemical cycles होते हैं. Two basic types of biogeochemical cycles. One is gaseous and one is sedimentary. Gaseous biogeochemical cycles की अगर हम बात करें तो mostly gaseous biogeochemical cycles are those जहाँ पर there is a prominent gaseous phase. तो एक prominent gaseous phase होता है वहां पर, जैसे कि कार्बन साइकिल में. कार्बन साइकिल में there is a prominent phase where this exists as carbon dioxide. Then there is nitrogen cycle. So there is a prominent gaseous phase in that cycle. So if you look at the cycle, this is the carbon cycle. Sedimentary cycles क्या है? Sedimentary cycle basically sedimentary cycle में basically the main reservoir is the lithosphere. And nutrients are released by mostly weathering of rocks. Sedimentary cycle का example है phosphorus cycle, is a very important cycle, very important example of the sedimentary cycle. And then there is also sulphur cycle. So given this, it is important that we just have a look at some important facts regarding the phosphorus cycle. And see, unlike carbon and nitrogen, which come primarily from the atmosphere, phosphorus occurs in large amounts as mineral in phosphate rocks and enters the cycle from erosion and mining activities. So through weathering, erosion, phosphorus enters the cycle. Phosphorus enters this cycle through weathering, through erosion. So कार्बन एंड नाइट्रोजन जो है वो प्राइमरीली एटमॉस्फेयर से आते हैं, पर फॉस्फोरस जो है दैट occurs as a mineral in phosphate rocks
and because it occurs in rocks mainly, ये कैसे enter करता है into the cycle? It enters through the weathering of rocks. Alright, or through erosion, through mining activities. Now phosphorus जो है जब plants में move करता है, animals के अंदर move करता है, so phosphates they move quickly, but ये जो processes that move them through the soil or through the ocean are very slow, and phosphorus cycle इस मामले में it is the slowest biogeochemical cycle. So phosphorus cycle is overall one of the slowest biogeochemical cycles. It's very slow. Okay. So basically phosphorus जो है it is found in rocks. So क्या होता है? There are these phosphorus bearing rocks, and ये phosphorus bearing rocks का tectonic upliftment हो जाता है. This is how it enters. Okay, so the global phosphorus cycle has these processes. So there is these phosphorus bearing rocks that are that undergo erosion, that undergo weathering, and then what happens is that they provide dissolved and particulate phosphorus to soils, lakes and rivers, and then there is transportation of phosphorus, riverine transportation of phosphorus to lakes, and then runoffs, and then sedimentation of particulate phosphorus. So this is the kind of cycle in a phosphorus cycle. It's a slow cycle, and mainly phosphorus, because it is found in rocks, so it is brought into, it enters the cycle through the process of weathering, right, through the process of erosion. Fine. Sulphur cycle की अगर हम बात करें तो sulphur cycle is a biogeochemical cycle in which sulphur moves between the rocks, waterways and living systems. All right. Sulphur is basically mostly sedimentary. It is mostly in the sedimentary phase, except those के compounds हैं hydrogen sulfide and sulfur dioxide that have a gaseous component. So there is a gaseous component to sulfur as well. अब sulfur कैसे enter करता है atmosphere में? Sulfur basically enters the atmosphere from different sources, primarily volcanic eruption. So you remember the sources of entry of sulfur into the atmosphere. That is volcanic eruption by combustion of fossil fuels from the surface of ocean and gases released by decomposition. So also remember, sulfur reservoir is in the soil and sediments where it is locked in organic and inorganic deposits. Organic deposits, so sulfur is locked in coal, oil and peat, and in inorganic deposits it is locked in pyrite rock and sulfur rock in the form of sulfate, sulfides, organic sulfur. ये release कैसे होता है? This is also released by weathering of rocks. There is erosional runoff, there is decomposition of organic matter, and it is carried to terrestrial and aquatic ecosystems in salt solution. So this is also a part of the sedimentary cycle. But अगर देखा जाए, so the primary source that we can say of sulfur is volcanic eruptions and hot springs. So now, why I am emphasizing so much on this is because there was a question in the prelims. पिछले साल के prelims में there was a question. So let's see this question. So in case of which one of the following biogeochemical cycles, the weathering of rocks is the main source of the release of nutrient to enter the cycle. So the weathering of rocks is the main source of release of nutrient to enter the cycle. Carbon cycle, nitrogen cycle तो नहीं है, gaseous cycles हैं. Phosphorus cycle, sulfur cycle also we saw is a sedimentary biogeochemical cycle, but phosphorus, this the one that suits most appropriately, the weathering of rocks is the main source. See, sulfur cycle के लिए the source that we can say volcanic eruptions के through enter कर सकता है. But phosphorus cycle के लिए the phosphorus is found in rocks. Phosphorus, see, we saw phosphorus occurs in phosphate rocks, and it can enter only through these rocks. So sulfur basically volcanic eruption. See, the thing is they're talking about the source.
So volcanic eruption is one source, important source of sulfur cycle, or is the source. But phosphorus cycle के लिए basically we can say this the most appropriate option is the phosphorus cycle. So दो तरीके के अगेन साइकिल्स बायोजियोकेमिकल साइकिल्स परफेक्ट हो सकते हैं, इम्परफेक्ट भी हो सकते हैं. परफेक्ट साइकिल, परफेक्ट न्यूट्रिएंट साइकिल वो है जिसमें जो न्यूट्रिएंट्स हैं तुरंत क्विकली रिप्लेस हो जाते हैं, क्विकली यूज अप हो जाते हैं एंड देन दे आर क्विकली रिप्लेस. लाइक गेशियस साइकिल में जो है दैट इज कंसिडर्ड जनरली परफेक्ट. बट when we talk about these sedimentary cycles, they are considered relatively imperfect because क्या होता है, कुछ nutrients जो हैं they get lost from the cycle and they go into soils, they go into sediments, and then for immediate recycling or immediate cycling के लिए available नहीं होते हैं. So that is about broadly about biogeochemical cycles. Next, what ecological niche. So ecological niche basically it is so a niche, ecological niche is a very specific segment of ecospace that is occupied by a single species. Ecological niche basically क्या represent करता है? It represents, so it is the range of conditions that an organism can tolerate, you can say. एक range होगा, एक particular organism, एक particular species एक रेंज, लेट्स से एक रेंज ऑफ टेम्परेचर में ही सर्वाइव कर सकता है. दैट इज स्पेसिफिक टू दैट स्पीशीज. एक पर्टिकुलर एक पर्टिकुलर रेंज है या एक पर्टिकुलर देयर आर ओनली दीज सर्टेन काइंड्स ऑफ रिसोर्सेज दैट दे कैन यूज. That species has only a very specific role that it can play in the ecological system. So all of that together constitutes what we call as an ecological niche. So niche basically एक species specific होता है and it is all of the environmental factors and the interspecies relationships that we can say influence that particular species. So basically niche जब हम कहते हैं, so it encompasses physical conditions, क्या उसको physical conditions चाहिए वहाँ पर survive करने के लिए, what are the environmental conditions जैसे कि temperature. Some species are there are species who are suited for only a particular kind of temperature range, a particular kind of terrain, and what is the kind of interactions that they have, what is the habitat they live in. So these are all part of a niche, the niche of the organism. तो generally क्या होता है, वो species जिनका जिनका niche limited होता है या जिनका niche narrow होता है, so उनको specialist species माना जाता है. फॉर एग्जाम्पल कोआलाज को ले लीजिए. कोआलाज जो हैं दे फीड ओनली ऑन लीव्स फ्रॉम यूकेलिप्टस ट्रीज इन ऑस्ट्रेलिया एंड दे आर एन एग्जाम्पल ऑफ स्पेशलिस्ट स्पीशीज. स्पीशीज ब्रॉडर नीशेस के साथ भी हो सकते हैं और उनको जनरलिस्ट माना जाता है. एक चीज हमेशा याद रखिएगा कि नो टू स्पीशीज कैन हैव द एग्जैक्ट सेम नीश. Okay. So each species has a distinct niche and no two species are believed to occupy the same niche. So niche is species specific. अब एक habitat की बात करें तो एक habitat और niche में क्या फर्क है? See, habitat, what we can say is that the niche is a subset of habitat because habitat can have many ecological niches and it can support variety of species. Niche is in a way a subset and it is not just habitat that we are talking about. So it is not even right to say that it is a subset, but niche is more than that. It talks about a habitat, but there is also these other conditions. So a habitat can have many ecological niches and it can support a variety of species. Fine. Next, very quickly and very importantly, okay, this is important, edge effect and ecotone. Edge effect and ecotone. Edge effect is basically क्या है? देखिए, जहां पर दो systems overlap, दो ecosystems overlap करते हैं, एक ecosystem और दूसरे तरीके का ecosystem overlap करते हैं,
उस रीजन ऑफ ओवरलैप में there is a greater diversity of life, right? So that is edge effect. Edge effect is an ecological concept that describes how there is greater diversity in the region where the edges of two adjacent ecosystems overlap, such as जैसे कि अगर लैंड है, ये लैंड बॉडी है एंड ये वाटर बॉडी है, इनके बीच का जो रीजन होगा दैट इज where these two ecosystems overlap, and वहां पर जो डाइवर्सिटी पाई जाएगी लाइफ की that will be greater. इसीलिए this is why the biodiversity that we see in wetlands, that is why there is so much importance that is being given to wetlands, because वहां पर rich biodiversity मिलती है. So that is the thing. So there is greater diversity of land. Forest और grassland के बीच का जो region है वो. Alright. Now ecotone क्या है? Ecotone is basically एज इफेक्ट. तो इफेक्ट हो गया, दैट इज द इफेक्ट कि वहां पर ग्रेटर डाइवर्सिटी मिलती. इकोटोन क्या है? इकोटोन एक ट्रांजिशन एरिया है बिटवीन द टू बायोम्स, दैट इज वेयर टू कम्युनिटीज मीट एंड इंटीग्रेट. ठीक है, तो ये अगर दो, so this region between the land and water, we can say that it is an ecotone. Because mangrove forest की बात कर लेते हैं. mangrove forest terrestrial and marine ecosystem, यहाँ पे terrestrial ecosystem and marine ecosystem का बीच का जो region होगा, this transition area होगा, that is mangrove forests. river bank again और marshland, dry area और wet area के बीच का जो region होगा, that is again an ecotone. estuary, जहां पर fresh water and salt water के बीच का जो रीजन होगा, द ट्रांजिशन जोन होगा, दैट इज अगेन एन इकोटोन. दिस इज एन एग्जांपल ऑफ एन इकोटोन. ग्रासलैंड इज एन एग्जांपल ऑफ इकोटोन बिकॉज वहां पर देयर विल बी ट्रांजिशन जोन बिटवीन अ फॉरेस्ट एंड अ डेजर्ट. सो अगेन ऐसे एरियाज में एज इफेक्ट देखने के लिए मिलता है. एंड देयर इज so edge effect describes how there is greater diversity in such regions. Then next, sentinel species. Sentinel species क्या है? Sentinel species basically are so sentinel species वो organisms हैं जो mostly animals ही होते हैं जो that help us detect risk, यानी कि they are used to detect risks to humans and they provide advance warning of danger. ठीक है, so ये जो term है primarily that is applied in the context of environmental hazards. So देखिए, some animals basically can act as sentinels because they are more susceptible or they have greater exposure to a particular hazard than humans that live in the same environment. So people जो है, for a long time we have observed animals and seeing their behavior, we have got signs कि अब hazard आने वाला है. Seeing that this is how they behave before a hazard occurs. So this they act as a warning. They give us a warning कि अब ये होने वाला है. They can be signs. They can give us signs for impending hazards. So इसका एक prominent example है, देखिए basically Japan में cats had developed this dancing cat fever or what Minamata disease basically in Minamata Bay, and that they basically it is a kind of neurological disease that is caused by severe mercury poisoning. So that was used. So looking at these cats consumed fishes that were contaminated with mercury and they developed this thing that is from them they were able to detect ki they got this problem that is a dancing cat fever, and usse humans were able to get ki ye jo fish hai isme mercury contamination hai. So such species are are sentinel species. अब ये sentinel species का एक और example है canaries. Canaries basically, see, this is a classic example is this canary in the coal mine. ये एक classic example है sentinel species का.
So basically ये they are used to detect कार्बन मोनोक्साइड इन माइंस, ठीक है. सो ये जो कैनरीज हैं दे डाई अर्ली इन दिस odorless carbon monoxide environment, that is when carbon monoxide is present in high concentration. So when people in mines used to see these birds dying, they get an idea that this is what carbon monoxide has spread, or this is, so they've provided an early warning signal for toxic gases, primarily कार्बन मोनोऑक्साइड. सो इसको इस तरीके की स्पीशीज को हम सेंटिनल स्पीशीज कह सकते हैं, जिसके सिंपल वर्ड्स में जिसके थ्रू हम एज ह्यूमंस वार्न हो सकें, या और वी गेट वार्न्ड बाय दीज ऑर्गेनिजम्स, राइट. नाउ next, we talk about ecological succession. Ecological succession. So, वो process by which communities of plant and animal species in an area are replaced or changed into another over a period of time, इसको हम क्या कहते हैं? इसको ecological succession कहते हैं. So, over a time, what happens is when the process by which communities of plants or animals get replaced or get changed into another, then that is what is known as ecological succession. Succession is a universal process of directional change in vegetation on an ecological time scale. तो क्या होता है, कभी कभी there is a large scale change that may occur in an area, or there may be destruction, it could be natural or man-made. So उससे एक community of plants and animals, they get replaced or they get changed with other species, with another community. So this is a very slow process that happens, and yes, there is a series of changes that takes place. One community replaces another, and then another community, और ये तब तक चलता रहता है जब तक एक stable, mature climax community develop नहीं हो जाती. So climax, so see, एक area है, let's say, एक वीरान area, there's nothing, and यहाँ पर first plant जो colonize करता है इस area को, the first plant that colonizes this area is what is known as the pioneer community. इसको क्या बुलाएंगे? Pioneer community. Final stage of succession, जब वो final stage पर पहुंच जाएगा, that will be known as the climax community. So initial वाले को pioneer community, and the final stage of succession, ये community में जो change हो रहा है होते 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 जो एकदम stable, mature, complex and long lasting community है, that will be the climax community. So we can see this, यहाँ पर मतलब ऐसे ही initial stage में एकदम ही bare rock है, कुछ नहीं है यहाँ पे, धीरे से यहाँ पे फिर pioneer stages में lichens come, and then there are small annual plants and then lichens that develop here. So this is the pioneer stage, ठीक है. So pioneer community जो है, जो initial plants that colonize, so then there are small herbs and grasses, and they are pioneer. This is the pioneer stage. फिर intermediate stage आता है जहाँ पर ये plants जो हैं then they grow, or then there are grasses, shrubs and shade intolerant trees, जो छोटे छोटे चीजें जो है intermediate stage पर develop होती हैं. फिर then there is shade tolerant trees, and then there is this long lasting stable community that has come, and that is the climax community, right? So this is how ecological succession works. This is what ecological succession is basically, ठीक है. So पहले जहाँ कुछ नहीं था वहाँ कैसे धीरे 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 करके पहले तो एक pioneer community आता है, फिर धीरे 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 करके there is a climax community that comes. So ये stages, the stages that lead to this climax community are known as sears, SERES, sears, या फिर उसको successional stages भी कहते हैं. So वो जितने भी ट्रांजिशनल कम्युनिटी होते हैं, जो ट्रांजिशनल कम्युनिटी होता है बीच में, ये क्लाइमैक्स कम्युनिटी बनने से पहले जो ट्रांजिशनल कम्युनिटी होगा उसको सीरियल कम्युनिटी भी कहते हैं. सीरियल कम्युनिटी.
अब दो तरह के सक्सेशन होते हैं, प्राइमरी सक्सेशन एंड सेकेंडरी सक्सेशन, ठीक है। अब प्राइमरी सक्सेशन जो है, देखिए अगर एक ऐसी जगह है जहां पर कुछ नहीं था पहले, कोई कम्युनिटी पहले एग्जिस्ट नहीं करती थी, तो वहां पर प्राइमरी सक्सेशन होगा। प्राइमरी सक्सेशन टेक्स प्लेस ओवर वेयर नो कम्युनिटी हैज एग्जिस्टेड प्रीवियसली, जैसे कि रॉक आउटक्रॉप्स, न्यूली फॉर्म डेल्टा, सैंड ड्यून्स, इमर्जिंग वॉल्केनो आइलैंड्स। तो मतलब यहाँ पे कोई कम्युनिटी नहीं थी, ऐसा नहीं कि कुछ डिस्ट्रॉय, वो एरिया डिस्ट्रॉय हो गया है या कुछ, या तो वो एक नया एरिया है या कुछ वहां पे कभी कोई डेवलपमेंट नहीं हुआ, वैसे जगह पे अगर हो रहा है, सो देन ऐसे न्यूली फॉर्म जगहों पर, देन दैट इज प्राइमरी सक्सेशन। इन प्राइमरी सक्सेशन on a terrestrial site, the new site is first colonized by few hardy pioneer species that are often microbes, lichens and mosses. तो ऐसे primary succession पे terrestrial site पर कुछ pioneer species जो होते हैं, they are microbes, lichens, mosses, right? And pioneers over a few generations alter the habitat conditions by their growth and development. So ये pioneers जो है grow करते रहते हैं and then धीरे धीरे करके ये habitat conditions को बदल देते हैं and then जो है बाकी का progress होता है। Secondary succession वो succession है जहां पर एक community जो है destroy हो चुकी है completely या partially, और उसके बाद वहां पर वो दूसरी community आ रही है। Secondary succession is a sequential development of biotic communities after the complete or partial destruction of existing community. So कैसे हो सकता है ये? एक mature या फिर intermediate community अगर है तो वो natural events, floods, droughts, fires के through destroy की हो सकती है, and so then इस तरीके का जो सेकेंडरी सक्सेशन है वहां पर बेसिकली ऑलरेडी कम्युनिटी एग्जिस्ट कर रही थी। सो ठीक है, तो एक सॉइल और ये सब तो वेल डेवलप्ड है, राइट? तो फिर क्या होगा कि फिर उसको ग्रास जैसी स्पीशीज जो है वहां पर वुड invade and then they can survive, and slowly then tall grasses come and then there are other plants that come and then they slowly, organisms start coming in, mice, rabbits, insects. So then there are trees that come up. So इस तरह से हो सकता है. So the difference between a primary and secondary succession is that, see, primary succession has to start from scratch. सेकेंडरी सक्सेशन कहाँ पर स्टार्ट होता है? वहां पर स्टार्ट होता है जहां ऑलरेडी एक वेल डेवलप्ड सॉइल होता है। सो इस मामले में सेकेंडरी सक्सेशन रिलेटिवली फास्टर होता है। तो यहाँ पर इकोलॉजिकल सक्सेशन दिया हुआ है, दैट वी हैव सीन, राइट? अब बायोडाइवर्सिटी, या फिर आज के लिए इसी पर रोक देते हैं। वी विल कंटिन्यू फ्रॉम हियर एंड वी विल कवर द इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स फ्रॉम हियर, ओके, फ्रॉम यूजिंग दिस मटेरियल, एंड इस तरह से जल्दी करेंगे एंड वी विल बी we'll try and cover the important topics that are there, and so for today we'll stop this discussion here, and baki ka we'll continue in the next video. So these are very basic things, but the thing is they can be relevant from the examination perspective. It is best not to ignore this static portion of environment and ecology also. Fine. So that's all for today. I mean, for this video.